उसके लिए फिर आप डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन्स, लाइक सेकेंडरी फ्लडिंग. 3 कैटेगरीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो सेकेंडरी फ्लडिंग में हम वाटर फ्लडिंग करते हैं, जिसमें पानी इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन वेल से, और फिर वो पानी पुश करता है आपको ऑयल को रिजर्वायर में, और प्रोड्यूसिंग वेल से आप उसको प्रोड्यूस करते हो. लेकिन इससे अराउंड 10 to 20% अमाउंट मैक्सिमम रिकवरी होती है. स्टिल देयर इज 40 to 50%, आधा आपका रिजर्वायर अभी भी नीचे मौजूद होता है. So you go for then tertiary recovery methods, which is EOR. Basically, in EOR there are number of methods in which we use different techniques and different solutions, different fluids, which we inject along with water or with other carrier into the reservoir, which helps oil to be mobile in the reservoir. जो आपका ऑयल मौजूद है, जब हमने पानी की इंजेक्शन की थी, तो जो कुछ अमाउंट पानी से मिला था वो उसके अलावा बाकी बहुत सारा अमाउंट आपका अभी भी रिजर्वायर में मौजूद है. तो पानी क्या करता है, वो बाईपास हो जाता है, बिकॉज इट्स मोर डेंसर देन योर ऑयल. सो वो बाईपास कर जाता है ऑयल को और प्रोड्यूसिंग वेल में आ जाता है, तो स्टिल ऑयल इज देयर. तो हम नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स या नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, उस पानी को बेसिकली अल्टर करते हैं या कोई दूसरी फ्लूइड यूज करते हैं, ताकि जो रिमेनिंग ऑयल है जिसको पानी ने बाईपास कर दिया था, we could produce that oil as well. So we will go for the traditional introduction of EOR. As we have discussed right now, that oil recovery operations traditionally have been subdivided in 3 stages. 3 stages होती हैं basically: primary, secondary and tertiary. Primary जो initial production की अपनी स्टेज होती है, जिसमें वो नेचुरल प्रेशर के साथ रिजर्वायर की जो फ्लो होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं. फिर सेकेंडरी रिकवरी पे हम वाटर इंजेक्शन करते हैं, जिसको वाटर फ्लडिंग भी नॉर्मली कहा जाता है, बिकॉज सेकेंडरी रिकवरी इज नॉट बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री. Normally they use this term water flooding, because in secondary recovery you normally do this water flooding. The traditional recovery processes are water flooding, pressure maintenance and gas injections, although the term secondary recovery is now almost synonymous with water flooding. उसके बाद फिर ये टर्शरी रिकवरी आ जाता है. द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज दैट obtained आफ्टर वाटर फ्लडिंग और वॉट एवर सेकेंडरी प्रोसेस वाज यूज्ड. मतलब जो भी मेथड हमने यूज किया था सेकेंडरी फ्लडिंग में, चाहे वो पानी था या, because in previous decades they also used gas and other techniques to maintain that pressure. They also considered them as secondary recovery. But tertiary process में हमने जो भी ऑयल रिमेनिंग था सेकेंडरी प्रोसेस के बाद, हमने डिफरेंट गैसेस या केमिकल्स या फिर थर्मल एनर्जी के थ्रू, नंबर ऑफ टेक्निक्स आर देयर फॉर टर्शियरी रिकवरी ना. तो हम वो यूज करते हैं टर्शियरी रिकवरी में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन, जो कि आपके रिजर्वायर में मौजूद है अभी भी. मोर देन 40% 50% आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो रिजर्वायर में मौजूद होता है, एंड यू नीड टू रिकवर दैट हाइड्रोकार्बन ना. सो इट सेज दैट the third stage of production was that obtained after water flooding. Tertiary process used miscible gases, chemicals and or thermal energy to produce additional oil from the secondary recovery process became uneconomical. अब इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि हमने डिफरेंट मिसेबल गैसेस यूज करते हैं. मिसेबल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच आर easy to mix with your reservoir fluid. Now this reservoir fluid might be your hydrocarbons, it might be your gas, or it might be any other fluid. So this gas will be miscible with that one. Miscible means easy to mix. And then we use different chemicals which basically develop a piston like front, and they try to move this hydrocarbon which is present in the reservoir to the producing well. उसके बाद फिर थर्मल प्रोसेस होता है, जिसमें हम इन सिटू कंबस्शन करते हैं रिजर्वायर के अंदर ही, और उससे जो हीट जनरेट होती है
बेसिकली वो हीट आपके हाइड्रोकार्बन्स को लाइट करती है जो हैवी क्रूड्स होते हैं, और उनको मोबाइल करती है, उनकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करती है, और फिर वो ऑयल जो रिमेनिंग है उसको प्रोड्यूस करवाती है। अब जहाँ पे सेकेंडरी रिकवरी प्रोसेस अनइकोनॉमिकल हो जाता है, इट मींस दैट आप पानी इंजेक्ट कर रहे हो एक वेल से, और प्रोड्यूसिंग वेल से भी आपको पानी ही मिल रहा है, वो ऑयल को बाईपास कर रहा है। अराउंड 5 to 10% आपने रिकवरी ऑयल की ले ली। अब इंजेक्शन वेल से आप पानी इंजेक्ट कर रहे हो और प्रोड्यूसिंग से पानी प्रोड्यूस हो रहा है। इट मींस नाउ इट्स अनइकोनॉमिकल, सो यू विल गो फॉर टर्शरी रिकवरी, जो अभी हमने डिस्कस किया। बट आप लोगों को कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑफ टीम्स। ऐसे सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, because I'm keen of being that the student should communicate with me. This is two-way communication, so आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो you can ask me in the chat box, meeting chat. So now there is a question that is tertiary method sequential technique. अब नॉर्मली तो ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स बताएं मुझे इसका आंसर, बट अब क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन है, तो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि टर्शरी मेथड सीक्वेंशियल टेक्निक इन द सेंस कि हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि 3 मेथड्स होते हैं, प्राइमरी रिकवरी, सेकेंडरी रिकवरी और फिर टर्शरी रिकवरी। तो क्या ये टर्शरी रिकवरी सीक्वेंशियल मेथड है? सीक्वेंशियल मेथड इन द सेंस कि लाजमी है कि प्रोडक्ट प्राइमरी मेथड भी अप्लाई पहले हो, उसके बाद फिर सेकेंडरी मेथड हो, फिर टर्शरी ही मेथड यूज होगा। मतलब ये जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, क्या ये लाजमी है टर्शरी रिकवरी मेथड के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि जो टर्शरी रिकवरी मेथड है वो हमेशा तब ही यूज हो जब हम प्राइमरी भी कर लें और सेकेंडरी भी कर लें। इट्स नॉट always the right case to go for, you know. So what it does is, it says that the drawback to consideration of 3 stages as a chronological sequence is that many reservoir production operations are not conducted in the specified order. A well-known example is production of the heavy oils that occurs throughout much of the world. If the crude is sufficiently viscous, it may not flow at economic rates under natural gas drives, so primary production would be negligible. For example, reservoir water flooding would not be feasible, therefore the use of thermal energy might be the only way to recover a significant amount of oil. अब दुनिया में कुछ ऐसे रिजर्वायर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट जो इसका मैं समराइज आपके लिए कर दूं कि ऐसे आपके दुनिया में बहुत सारे रिजर्वायर्स होते हैं जो कि हैवी क्रूड ऑयल जिनमें पाया जाता है। अब ये हैवी क्रूड ऑयल इतना हैवी होता है, विस्कस इन नेचर होता है कि नीचे जो उनके ड्राइव मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जो आपने जितने भी ड्राइव मैकेनिज्म्स पढ़े हैं अपना रिजर्वायर इंजीनियरिंग में, तो जो हैवी क्रूड ऑयल्स होते हैं उनमें ड्राइव मैकेनिज्म्स प्रेजेंट तो होते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच कैपेबल टू पुश दिस ऑयल फ्रॉम द रिजर्वायर टू द वेल बोर ना। तो वहाँ पे अब प्राइमरी प्रोडक्शन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता कि वो, क्योंकि उसके नेचुरली जो उसके अपनी ड्राइव फोर्सेस हैं, दोज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली ना, क्योंकि आपका क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा विस्कस है। तो प्राइमरी खत्म हो जाता है। सेकेंडरी रिकवरी में आप पानी को इंजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हैवी क्रूड है, और आप पानी को इंजेक्ट करेंगे तो वो क्विकली उसको बाईपास कर लेगा और फिर पानी प्रोड्यूस होगा। सो यू आप डायरेक्टली जो ये आपका टर्शरी मेथड होता है उसको आप अप्लाई करते हो विदाउट गोइंग फॉर प्राइमरी रिकवरी और सेकेंडरी रिकवरी। आप डायरेक्ट टर्शरी रिकवरी पे आते हो और उसमें भी आप थर्मल एनर्जी मेथड यूज करते हो, जिसको आप स्टीम इंजेक्शन कह लें या
SAGT मेथड कह लें या फिर इन situ कंबर्शन कह लें. So there are number of techniques for thermal energy. तो सेकेंडरी रिकवरी मेथड में हम ये थर्मल मेथड्स यूज करते हैं तो ताकि आपका जो हैवी क्रूड है पहले आप उसको थ्रू हीट और थ्रू टेम्परेचर उसको लाइट करते हो और फिर एक फ्रंट बनता है आपका उस जोन का, ट्रांजिशनल जोन का, और वो पुश करता है आपके उस क्रूड को जो कि लेस विस्कस बन चुका होता है ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी, और फिर वो प्रोड्यूस होता है. So in this case, a method considered to be a tertiary process in a normal chronological depletion sequence would be used as the first and perhaps final method of recovery. तो ये पहला और आखिरी मेथड ही होता है ऐसे रिजर्वायर्स में जो है बहुत ज़्यादा हैवी क्रूड ऑयल्स होते हैं. So it's not always necessary that this tertiary method should follow any sequential technique. कई सारे केसेस में आप सेकेंडरी और टर्शरी करते हो, कई सारे केसेस में आप प्राइमरी और टर्शरी करते हो, सेकेंडरी को ओमिट कर देते हो. So it depends upon your reservoir composition, your reservoir pressure, your reservoir drive mechanisms, and there are a number of other factors which are considered first, and then you are concluding that through which chronological sequence you are going to follow in your hydrocarbon production. So any questions, beta? No? कोई क्वेश्चन नहीं है? Please raise your hands so that I can see you are present in the class. My voice is also clear. You are able to understand? No questions. ये कौन है 15 बड़ा होशियार है? यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी. चलो चलो ठीक है. So if you have any question, please do let me know now, because I don't like to be speaking all the time. So the two-way communication must be there. भले आप अपना माइक खोल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है. So I won't mind that, but at least you should be in discussion. So where were we? Yes. So sequential technique लाजमी नहीं है कि आपका टर्शरी मेथड उसको फॉलो करे. अब वही सवाल सेकेंडरी मेथड पे भी आ रहा होता है कि आप लाजमी है कि हम प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पे जाएं और फिर टर्शरी पे जाएं, और इज इट पॉसिबल दैट हम डायरेक्टली प्राइमरी मेथड से फिर टर्शरी मेथड पे चले जाएं? So the answer is that it's not necessary to follow this sequential technique, because normally every student has this concept in their mind that there are these three methods and we should be following that. कि पहले उसको अपने प्रेशर पे प्रोड्यूस करो, फिर उसको पानी की इंजेक्शन करो, फिर प्रोड्यूस करो, और फिर अपना केमिकल्स या जो भी टर्शरी मेथड्स हैं वो यूज करो. So there should be a sequential technique, which was the conventional thought before, but not in these few decades. It's being proved that it's not necessary to follow these sequential techniques. कि आप प्राइमरी के बाद डायरेक्ट टर्शरी पे आ सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को एमिट करके डायरेक्ट आप टर्शरी यूज कर सकते हैं, या कोई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आप टर्शरी को यूज ही नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं. आपकी वाटर इंजेक्शन से ही अच्छा खासा अमाउंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो सिर्फ आप प्राइमरी और सेकेंडरी पे ही रहते हो, टर्शरी पे नहीं जाते. सो देयर इजंट मैंडेटरी टू फॉलो दिस सीक्वेंशियल टेक्निक ना. So it says that in other situations, the so-called tertiary process might be applied as a secondary operation instead of water flooding. This action might be dictated by such factors as the nature of tertiary process, availability of injectants, and economics. As I told you, कि टर्शरी मेथड पे हम नहीं जाते, सेकेंडरी ऑपरेशन को ही हम टर्शरी मेथड कंसिडर कर लेते हैं, जिसको हम वाटर फ्लडिंग करते हैं. कि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या इंजेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, या देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. ना, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन कमिंग lectures. So it says, for example, if a water flood before application of tertiary process would diminish the overall effectiveness
then the water flooding stage might reasonably be bypassed. अब इसमें ये उल्टा केस बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप उस वेल में पानी इंजेक्ट करेंगे तो there might be an overall effectiveness of reservoir will be depleted. It means that आप जब पानी को इंजेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है उस इंजेक्टिविटी से आपके रिजर्वायर की जो वेलबोर की सराउंडिंग परमेबिलिटी है वो डैमेज हो जाए या कन्फर्मेंस कंट्रोल हो जाए. कन्फर्मेंस कंट्रोल इज अ टर्म व्हिच वी विल डिस्कस इन अगेन इन कमिंग स्लाइड्स. और आपका जो सीईपी का प्रॉब्लम है वो भी उसी पे है. सो वी विल डिस्कस इन फ्यू कमिंग स्लाइड्स दैट एज वेल कि आपका जो वेलबोर की परमेबिलिटी है सराउंडिंग की जहाँ से वेल प्रोड्यूस हो रहा होता है दैट माइट आल्सो डिमिनिश यू नो कि उसकी अगर परमेबिलिटी ही कम हो जाए आपके वाटर इंजेक्शन से. सो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक्स एज वेल. डिपेंड्स अपॉन योर reservoir type, reservoir characteristics that what method you're going to use. No? So after primary flooding, it's not necessary in some cases. आप direct tertiary पे आ जाते हो. उसमें आपके गैस इंजेक्शन होती है, थर्मल इंजेक्शन होती है या डिफरेंट केमिकल्स आप इंजेक्ट कर रहे होते हो. सो देयर इज नो नीड ऑफ वाटर फ्लडिंग. और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी पे जाते हो. टर्शरी को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. So it's not sequential. These both methods are not sequential, tertiary or secondary method. Na? So whatever the situation right there is, whether it's reservoir characteristics, whether it's economical problem, whether it's accessibility or injectivity problems. So whatsoever problem is there, it depends upon the scenario at that time and on your production history कि आप उसको कौन से मेथड्स आपने यूज करने हैं. आइदर यू विल गो फॉर chronological sequence or not, or you are skipping primary method, or you are skipping secondary method, or you are skipping tertiary methods. So it depends upon your reservoir characteristics and your economical conditions. अब यहाँ पे एक टर्म है कि आइदर ईओआर और टर्शरी रिकवरी. नॉर्मली अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई ईओआर और टर्शरी में क्या फर्क है तो दे विल से दैट इट्स सेम. सो किसी हद तक सही भी हैं कि these both terms are synonyms to each other, but it's better to go for enhanced oil recovery instead of saying tertiary recovery. Why? Because of such situations, the term tertiary recovery fell into disfavor in petroleum engineering literature and the designation of EOR becomes more accepted. अब ये ऐसा क्यों है कि हम EOR को प्रेफरेंस देते हैं और we avoid to use this term as a tertiary recovery? So it says that another descriptive designation commonly used as improved oil recovery, which includes EOR, but also encompasses a broader range of activities, example, reservoir characterization, improved reservoir management, and infill drilling. So because of the difficulty of chronological oil production classification, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो उसकी chronological sequence है हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी बेस पे ये शुरू में टर्म्स डेवलप हुए थे जिसमें आपका प्राइमरी मेथड था, फिर सेकेंडरी मेथड, एंड देन देयर वाज अ टर्शरी रिकवरी मेथड. अब ये टर्शरी इन अ सेंस तब टर्शरी बनेगा जब वो इन दो ऑर्डर्स को फॉलो करता है. अगर वो इन दो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता तो इट मींस इट्स नॉट टर्शरी रिकवरी. और हम उसको प्राइमरी रिकवरी भी नहीं कह सकते या सेकेंडरी रिकवरी भी नहीं कह सकते क्योंकि I don't know that whether we are using it at third level, at first level, or second level. So इसलिए scientists have or researchers or academia has come to a conclusion that instead of tertiary recovery हम उसको enhanced oil recovery कहेंगे कि EOR हम पहली स्टेज पे यूज कर ले तो it will be EOR as well. अगर उसको सेकेंडरी पे भी यूज करते हो फिर भी enhanced oil recovery है. आपका जो लैंग्वेज सेंस है वो चेंज नहीं होता इससे. So we avoid for improved oil recovery as well क्योंकि improved oil recovery का जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. उसमें
आपके ये इनफिल ड्रिलिंग और रिजर्वायर मैनेजमेंट और रिजर्वायर कैरेक्टराइजेशन, ये चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि इनहेंस ऑयल रिकवरी में कंसिडर्ड नहीं होती। इनहेंस ऑयल रिकवरी में आप सिर्फ मेथड्स पे फोकस करते हो इन ऑर्डर टू reduce the hydrocarbon. So you are not interested in reservoir management or another processes. So therefore we use term enhanced oil recovery instead of tertiary recovery or improved oil recovery ना। उसके बाद we will go for primary recovery. A classification scheme is clearly used in that it establishes a basis for communication among technical persons. However, it also has a pragmatic utility in the implementation of taxes, laws, and accounting rules. Primary recovery results from the use of natural energy present in reservoir as the main source of energy for the displacement of oil to producing wells. Again, you have studied this as well, and you know that there are different drive mechanisms present into the reservoir. किसी भी रिजर्वायर में उसके अपने ड्राइव मैकेनिज्म्स होते हैं, गैस कैप होता है, वाटर ड्राइव होता है, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सो दोज ड्राइविंग फोर्सेस आर responsible for this primary recovery के these natural energy sources, जिसमें गैस ड्राइव है, गैस कैप है, नेचुरल वाटर ड्राइव है, या फ्लूइड एंड रॉक एक्सपेंशन है, या ग्रेविटी ड्रेनेज है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं. तो ये जो मेथड्स होते हैं ये उस ऑयल को जैसे ही आप रिजर्वायर को हिट करते हो और उसको चैनल देते हो वेलबोर में, तो उसका जो प्रेशर होता है it tries to push those hydrocarbons into the wellbore. And जैसे आपने आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड्स में भी पढ़ा होता है. अच्छा, हम आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड्स को यूआर में प्राइमरी में रखते हैं या सेकेंडरी में रखते हैं या टर्शरी में रखते हैं. तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वो प्राइमरी रिकवरी के ही पार्ट होते हैं, आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड्स, जिसमें आपकी सकर और पंपिंग होती है, गैस लिफ्ट होता है, या सेमी सबमर्सिबल पंप मेथड होता है. तो ये जो मेथड्स होते हैं ये आपके प्राइमरी रिकवरी के पार्ट होते हैं, बिकॉज कि आपका रिजर्वायर जो है जब तक वो अपनी नेचुरल प्रोसेस की एनर्जी उसमें मौजूद है, इट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेथड. तो उसमें आप अगर आपने डिटेल में उसको पढ़ा है कि जब वो हाइड्रोकार्बन्स वेलबोर में प्रेजेंट होते हैं, तो वेलबोर में प्रेजेंट होने के बाद आप आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड अप्लाई करते हो. क्यों? क्योंकि वो वेलबोर के बॉटम से सरफेस तक फ्लो नहीं करवाते, इतना प्रेशर नहीं होता, बट दे हैव द प्रेशर टू transport that crude or that hydrocarbons from the reservoir into the wellbore. वो wellbore तक आ जाते हैं, इतना फ्लो होता है उनमें. तो still there is that natural energy in that. इसलिए हम artificial methods को प्राइमरी रिकवरी मेथड के पार्ट में रखते हैं कि they have their energy, और फिर वो मेथड्स जो हैं उनको डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हैं ताकि वो मतलब ऐसे समझ लें कि एक नीचे कुआं होता है और आपने जैसे मूवीज में देखा होता है कि आप या गांव में जाते हैं तो आप कोई चीज नीचे फेंकते हैं और फिर उसमें से वो पानी उठा के ऊपर ले आते हैं. तो इट्स द सेम प्रोसेस फॉर आर्टिफिशियल लिफ्ट कि आपके वेलबोर तक वो हाइड्रोकार्बन्स आ चुके होते हैं, तो आप डिफरेंट मेथड यूज करते हो उनको बॉटम से लेके सरफेस तक ले आने में. सो स्टिल इट्स द पार्ट ऑफ योर primary recovery method. The particular mechanism of lifting oil to the surface once it's in the wellbore is not factored in the classification of a scheme. उसके बाद है secondary recovery. As you all are aware that in secondary recovery we use different fluids, normally or mostly it's water. जब आपकी नेचुरल मैकेनिज्म्स जो आपके हैं, जैसे गैस कैप का प्रेशर हो गया या गैस का एक्सपेंशन हो गई या ऑयल कॉलम वेल्स टू डिस्प्लेस ऑयल इमिसिबल, तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं जब ये यूटिलाइज हो जाती हैं और
हेलो, कौन बीच में बात कर रहा है यार? Can you all guys hear me? Yes, sir. यस सर, यस सर। तो बेटा, सो 1 मिनट रुक जाए, अजान आ रही है यहाँ पे। Secondary recovery method. I was discussing about this secondary recovery method. Okay, secondary recovery results from the augmentation of natural energy through injection of water or gas to displace the oil towards producing wells. Gas injection in this case is either into a gas cap or pressure maintenance and gas cap expansion. अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका किस टाइप का रिजर्वायर है ना, कि आप नॉर्मली सेकेंडरी रिकवरी में वाटर इंजेक्ट करते हो और इंजेक्शन वेल से आपने वाटर इंजेक्ट किया। अब वो जो वाटर होता है, आप रिजर्वायर कॉलम होता है, एज यू नो इन रिजर्वायर देयर आर डिफरेंट कॉलम्स, गैस कॉलम, ऑयल कॉलम, एंड देन देयर इज दैट द बॉटम देयर इज अ वाटर कॉलम। सो आप जब वाटर इंजेक्शन कर रहे होते हो तो वो आप ऑयल कॉलम में इंजेक्ट करते हो उसको। और अगर आपने एज अ सेकेंडरी फ्लूइड गैस को इंजेक्ट करना है, अगर गैस के रिजर्वायर का बहुत ज़्यादा है और वो बिल्कुल ही आपका वेलबोर को क्विकली अप्रोच में नहीं है, तो आप फिर उसको गैस को एज अ सेकेंडरी फ्लूइड यूज करते हो और उसको आपने फिर इंजेक्ट करना होता है गैस कैप में, ताकि जो गैस कैप का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे और वो ड्राइविंग फोर्स हो आपके हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन का। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिजर्वायर टाइप एंड whether it's gas cap or it's any other reservoir. So depending on that, you will consider which fluid you are using for secondary recovery. Na? So it says gas processes that are based on other mechanisms such as oil swelling, oil viscosity reduction, or favorable phase behavior are considered as your processes. So ये सारे gas processes की parts होते हैं. Again, an immiscible gas displacement is not as efficient as water flood and is used infrequently as a secondary recovery process today. पहले क्या होता था, आप गैस को रिजर्वायर में ही इंजेक्ट कर रहे होते थे और वो एज एन एमिसिबल फ्रंट यूज होती थी। लेकिन जब आपने पानी इंजेक्ट शुरू किया करना, तो इट गिव मोर फार बेटर रिजल्ट्स देन गैस, क्योंकि जो फ्लूइड लिक्विड और लिक्विड की इंटरेक्शन है, इट वाज मोर प्रोन एंड मोर इफेक्टिव देन कंपेयर टू एयर एंड यू नो द फ्लूइड। सो सेकेंडरी रिकवरी प्रोसेस में मोस्टली अब वाटर फ्लडिंग हम यूज कर रहे होते हैं बिकॉज इट्स मोर इफेक्टिव। और आपने टर्शरी रिकवरी मेथड पे भी जाना होता है, तो टर्शरी के लिए आपको पहले सेकेंडरी रिकवरी से जितनी भी पॉसिबल इंक्रीमेंट हो सकती है आपके हाइड्रोकार्बन्स की रिकवरी की, वो आप करते हो। और जब पानी इंजेक्ट कर रहे होते हो, यू ऑलरेडी आर नोइंग दैट व्हाट इंजेक्टिविटी प्रॉब्लम्स माइट बी देयर और हाउ रिजर्वायर pressure is behaving, how it's altering the porosity and permeability of that reservoir, and all those behaviors are known to you by water flooding. So you plan your tertiary method according to that. And today water flooding is almost synonymous with the secondary recovery classification. जहाँ भी आपको secondary recovery की बात होगी, तो you should assume or understand that it's water flooding. अब EOR है. I didn't wrote tertiary recovery. As I told you earlier, that it's better to write enhanced oil recovery or EOR instead of writing tertiary recovery. प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो वही रहेंगे, क्योंकि अगर वो है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट ईआर पे आ जाते हो. यू विल नॉट से इट्स टर्शरी रिकवरी.
So it says EOR results principally from the injection of gases or liquids, chemicals, and the use of thermal energy. हाइड्रोकार्बन गैस, CO2 या नाइट्रोजन या फ्लू गैसेस, ये सारे यूज होते हैं यूआर प्रोसेस में. सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट वो डिपेंड करता है कि आपका रिजर्वायर कैसा है. आई मीन उसका ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, गैस कैप है नहीं है, वाटर ड्राइव उसका मेन फोर्स है जो कि पुश कर रहा है उसको. So your selection of your method will be solely depending upon your reservoir type, reservoir characteristics, and your fluid composition. कि आपके रिजर्वायर में कौन किस टाइप की फ्लूइड मौजूद है. जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, whether they are light, they are medium, heavy, are they condensate, या उनमें जो मिसिबिलिटी है पानी और ऑयल की वो ज्यादा है. मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स आप पहले कंसिडर करते हो एंड देन यू आर गोइंग टू फाइनलाइज दैट व्हिच योर मेथड यू आर गोइंग टू यूज इन दैट particular reservoir. The use of gas is considered as an EOR process if the recovery efficiency significantly depends on mechanisms other than immiscible frontal displacement characterized by high IFT permeabilities. ना होता ये कि आप नॉर्मली एक रिजर्वायर का फ्रंट बनता है नीचे जब आप कोई भी इंजेक्शन कर रहे होते हो, और वो फ्रंट फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स को पुश कर रहा होता है. आई विल शो यू दोज फिगर्स इन कमिंग स्लाइड्स. सो होता ये है कि आप जब गैस इंजेक्ट करोगे तो उसमें तो कोई फ्रंट नहीं बनता गैस, क्योंकि गैस इज नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म एंड wherever it finds the way it tries to flow there. तो immiscible frontal displacement का कॉन्सेप्ट नहीं आता अपना गैस इंजेक्शन में. बट अगेन I told you that it depends upon your reservoir type, reservoir characteristics, and your fluid characteristics that which method you are using. अगर आपकी गैस की डिमांड है वहाँ पे, गैस रिजर्वायर है आपका और आप गैस इंजेक्ट कर रहे हो, then there will be no any immiscible frontal displacement or concept of IFT or wettability alteration because it's already gas. So there can be number of reasons that कि उस गैस का प्रेशर लो हो गया या उस गैस में इसका जो पर्टिकुलर अपना ड्राइव मैकेनिज्म था वो डिप्लीट हो गया. So you will go for gas injection there. Secondly, several liquid chemicals are commonly used. मुख्तलिफ chemicals हम use कर रहे होते हैं. इसमें normally जो फील्ड में यूज होते हैं those are polymers, surfactants and other solvents. तो केमिकल लिक्विड्स में सिर्फ इन तीनों लिक्विड्स पे लिमिट मतलब केमिकल फ्लोटिंग नहीं होती. देयर आर नंबर ऑफ अदर लिक्विड्स एज वेल. सो इट डिपेंड्स अपॉन अगेन कि आप वो पर्टिकुलर मेथड क्यों सिलेक्ट करना चाहते हो. मिसाल के तौर पे अगर कोई रिजर्वायर आपका सैंडस्टोन रिजर्वायर है और आप उसमें सरफेक्टेंट इंजेक्ट करते हो तो वो क्यों कर रहे हो. अगर वो कार्बोनेट रिजर्वायर है आप उसमें पॉलीमर इंजेक्ट कर रहे हो तो इज इट वायबल टू गो फॉर पॉलीमर फ्लडिंग. अगेन आई विल से दैट वी विल कंसिडर ऑल द पैरामीटर्स. मैं बार बार ये सारे पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ तो वो मैं आपको एक टेबल शो करवाऊंगा. उस टेबल में आप ये चीज देख सकते हैं कि which parameters are related to which EOR technique basically ना. तो कौन सी EOR technique कौन से मेथड के लिए applicable है, we will discuss that in coming slides. So for now you need to understand that in chemical flood आप वो जो पानी इंजेक्ट कर रहे थे सेकेंडरी रिकवरी मेथड में, आप उसी पानी में अल्ट्रेशंस करते हो. अल्ट्रेशंस इन अ सेंस कि आप उस पानी को या तो ज्यादा विस्कस बनाते हो जो कि आप का पॉलीमर बनता है. अब पॉलीमर का यूज ही क्यों होता है, आप यूज क्यों करते हो पॉलीमर का, कि जैसे ही आपने पानी इंजेक्ट किया था तो वाटर वाज व्हाट वी से मोर डेंसर देन योर ऑयल. तो उसने ऑयल को बाईपास कर लिया.
अब इसमें जो ये फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट वाली बात आ रही है, इमिसिबल फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली when we will particularly study this polymer flooding और surfactant flooding, तो उसमें डिटेल में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो पानी जब बाईपास हो जाता है तो it makes a structure like fingers are crossing through that bed। तो वो मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा आगे चल के। तो वो बाईपास कर जाता है, लेकिन उसी जगह पे अगर आप उसको ज़्यादा विस्कस बना देते हो उसी पानी को, तो वो फिंगर्स की शेप के अपोजिट में एक पिस्टन टाइप फ्रंट बनाता है, जिसको एमिसिबल फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। तो वो आपके उस एक पिस्टन टाइप जो डिस्प्लेसमेंट आती है, तो वो आपका रिमेनिंग जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिन पोर्स में पहले पानी एक्सेसिबल नहीं था, वहां पे ये पॉलीमर उसको पुश करता है और उन जोन्स में इंटर होता है जहां पे आपका पानी इंटर नहीं हो पाया और उसने बाईपास कर दिया, और उन रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन्स को वो प्रोड्यूस करवाता है। इसी तरह सरफेक्टेंट्स, बिकॉज यू आर इन योर फाइनल ईयर, यू मस्ट बी अवेयर, आप अपने FYP भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि सरफेक्टेंट का काम क्या होता है। मेजरली वो अपना IFT रिड्यूस करता है, इंटरफेशियल टेंशन। You guys are again I'm saying that you are, I'm just speaking, ये इस virtual lectures का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि स्टूडेंट्स के लिए फायदा है कि टीचर बस बोलता रहता है और स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनना होता है, and it's just not giving the sense of the lecture, because in lecture when teacher and student have communication and when they ask questions and when they discuss each topic, so then it becomes understandable that टीचर को भी अब लगता है कि स्टूडेंट्स ने चीज़ों को समझ लिया है। बट in this type of setup, uh, it's very boring and it's very one way communication. So बहरहाल, I was saying about the surfactant के IFT जब आप अल्टर करते हो किसी भी रिजर्वायर में, कि अब IFT होती क्या है, इट्स द सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स, के दो लिक्विड्स के दरमियान जो सरफेस टेंशन होती है। जैसे आपको पता है कि रिजर्वायर में पानी और ऑयल दे आर कंबाइंड टुगेदर लिविंग इन दैट रिजर्वायर। तो अगर इनकी अटैचमेंट आप रिमूव कर लो तो आपका ऑयल ज़्यादा मोबाइल हो जाता है, कि उसकी अटैचमेंट अगर उन फ्लूइड से जो कि रिजर्वायर में ऑलरेडी मौजूद थी, जैसे कोनेट वाटर हो गया, उसके साथ जो इंटरेक्शन ऑयल का मौजूद है वहाँ पे, अगर आप उसको कम करते हो उस इंटरेक्शन को, तो ऑयल वहाँ से निकल के मोबाइल हो जाएगा और एंड देन इट विल बी प्रोड्यूसिबल। तो सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट्स की खासियत ये है कि अगर उसका आप स्ट्रक्चर देखें, सो इट्स from one side it's hydrophilic in nature, and from other side it's hydrophobic in nature। so एक ही केमिकल में ये दोनों खासियतें मौजूद हैं। अब ये दोनों टर्म्स, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, कि ये पानी के साथ अटैच हो सकता है, और हाइड्रोफोबिक इन नेचर के ये ऑयल के साथ भी अटैच हो सकता है। सो जब आप सरफेक्टेंट्स इंजेक्ट कर रहे होते हो, तो जब वो नीचे जाते हैं तो वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन कमिंग लेक्चर्स एज वेल, IFT क्या होती है। बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप मुख्तलिफ केमिकल्स यूज करते हैं उसी पानी में। अब वो पानी या तो आपका जो अवेलेबल सोर्स होता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, कोनेट वाटर हो सकता है, या कोई भी पानी हो सकता है, बट इट शुड बी compatible with that chemical and with your reservoir as well। तो अब वो उस पानी को यूटिलाइज करते हैं और फिर नंबर ऑफ केमिकल्स उसमें ऐड करते हैं, और फिर आप उसको इंजेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर हाइड्रोकार्बन रिकवरी। उसके बाद फिर थर्मल प्रोसेसेस आते हैं। सो इट्स टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ यूज ऑफ स्टीम या हॉट वाटर आप इंजेक्ट करते हो, जो कि इंस्टीट्यूट जनरेशन करता है आपकी थर्मल एनर्जी की, और ऑयल कंबशन होती है।
और उससे फिर नंबर ऑफ प्रोसेसेस अकर होते हैं, जैसे कि आपका तो एक फ्रंट बनता है, स्टीम फ्रंट। दूसरा, टेम्परेचर जब शिफ्ट हो रहा होता है आपका स्टीम से आपके रिजर्वायर में, तो वो आपके रिजर्वायर की जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी विस्कोसिटी को कम करता है। उनकी विस्कोसिटी जब रिड्यूस होती है तो वो ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, एंड देन दे आर एबल टू travel through the reservoir and are being produced from the production well. So again, in thermal recovery, number of methods are there. Steam injection, cyclic steam injection is there, and SIGD method is there. आप नीचे रिजर्वायर फायर फ्लडिंग इज देयर, कि आप नीचे रिजर्वायर में कंबशन करते हो और वो कंबशन आपकी हाइड्रोकार्बन्स का एक की हैवी हाइड्रोकार्बन्स की विस्कोसिटी को रिड्यूस करती है और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करवाती है प्रोडक्शन वेल से। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ बेटा? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे। बस सर जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं पूछूं? यू नो बट हाउ यू विल आंसर? यू नो आपकी बड़ी बचत है ऐसे क्लासों में। इवन टीचर इज आस्किंग एंड आप रिस्पॉन्ड ना करो, फिर भी टीचर तो आपको डांट नहीं सकता यहाँ पे, बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, यू नो। जब तक टीचर डांटे ना तो उसको ऐसा लगता है कि उसका लेक्चर पूरा ही नहीं हुआ। So now someone have asked that are all surfactants hydrophilic and hydrophobic in nature? बेटा सर, अगर आप सर्फेक्टेंट की बात करेंगे तो कोई सर्फेक्टेंट्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर भी होते हैं, कोई सर्फेक्टेंट्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। अब ये दोनों आपको मैं उनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा व्हेन वी विल बी इन फिजिकल क्लासेस। सो उसका जो हेड होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसका हेड और टेल होता है। तो हेड और टेल में एक साइड आपके हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है और दूसरी साइड हाइड्रोफोबिक होती है। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है सर्फेक्टेंट का, कि सर्फेक्टेंट का मकसद ही ये होता है कि वो, अच्छा, उसमें जो डिफरेंशिएशंस होती हैं वो फिर फर्दर आपकी एन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स हैं, कैट आयोनिक सर्फेक्टेंट्स हैं। अब ये क्या है, वी विल डिस्कस दोज इन सर्फेक्टेंट फ्लडिंग, कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, आयोनिक चार्जेस के कैसे डिफरेंसेस हैं। बट जो उसकी मतलब नेचर है सर्फेक्टेंट्स की, वो यही है कि दे आर हैविंग दीज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए और हाइड्रोफोबिक भी होना चाहिए। सो इवन माय पीएचडी वाज ऑन पॉलीमर नैनो कंपोजिट के सर्फेक्टेंट की जगह मैंने कहा कि आई विल नॉट बी यूजिंग सर्फेक्टेंट्स, बट आई डेवलप्ड अ फ्लूइड। मैंने ऐसी फ्लूइड सिंथेसाइज की थी जिसमें वो नैनो पार्टिकल्स और पॉलीमर का कंपोजिट था, और वो एज अ सर्फेक्टेंट भी यूज हो रहा था, कि उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि एक उसकी एक पूरी शीट थी, उस शीट पे कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर थे और कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर थे। सो अब ऐसी केमिकल्स को वी कॉल दीज केमिकल्स एम्फीफिलिक इन नेचर। अब एम्फीफिलिक ऐसे आपके केमिकल्स होते हैं जो कि both जिसमें both characteristics are present in these amphiphilic natured chemicals na? They are also hydrophilic in nature and hydrophobic in nature. So when they go into the reservoir, they try to reduce the IFT of that fluid. So how that mechanism is taking place, we will discuss in coming lectures. But for now, you need to understand that the function of surfactant is to reduce the IFT, and the function of polymer is to uh, create a immiscible frontal displacement and
try to push the oil, or different chemicals are there which are used for altering the wettability of your reservoir rock. Now, what is wettability? You already know that. So, number of chemicals are there, and they have their different functions. Na? So, what I want to conclude that when the chemical composite which I developed, उसमें ये सारी खासियतें थी. वो viscous भी था, उस IFT भी reduce करता था और wettability भी alter करता था. एक ही fluid तीनों काम कर रहा होता था. So that was basically my achievement in my PhD. So we will also discuss that in coming slides as well. But for now, you need to understand that हर chemical का अपना एक role होता है जो वो प्ले करता है किसी भी रिजर्वायर में जब आप उसको इंजेक्ट करते हो. नाउ अब आप कैसे फाइनल करते हैं ये केमिकल, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिजर्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर रिजर्वायर फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजर्वायर टाइप, ड्राइव मैकेनिज्म्स कौन से थे. सो after that someone is asking that how combustion occurs when no oxygen present in reservoir. Very good question. के रिजर्वायर में कंडीशंस एरोबिक होती हैं या नॉन एरोबिक होती हैं. अगर नॉन एरोबिक हैं, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कंबशन कैसे होती है? आप क्या करते हो, जब आप नीचे इग्नाइटर रखते हो, किसी भी चीज को जलाने के लिए तीन चीजें लाजमी होती हैं. पहला सोर्स, और फिर एलिमेंट, और फिर वो कंबस्टिंग एलिमेंट ना. तो ये तीनों चीजें लाजमी होती हैं. अब आपके पास नीचे ऑयल मौजूद है, आप नीचे इंसिट्यू कंबस्टन कर रहे हो, आप अपना पानी इंजेक्ट करते हो. अब जब पानी इंजेक्ट कर रहे हो, जो स्टीम इंजेक्ट कर रहे होते हो, उस स्टीम में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जैसे ही वो सोर्स प्रेजेंट होता है तो आप नीचे उसको इग्नाइट करते हो, और कंटिन्यूसली आप ये इंजेक्शन, कहाँ पे हम स्टीम इंजेक्ट करते हैं, कहीं भी हम एयर इंजेक्ट करते हैं. अब एयर में भी आपकी ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो उसी फ्लेम को बरकरार रखने के लिए नीचे जो हमने आग जलाई है, जो रिजर्वायर में हमने पहले एयर इंजेक्शन की, फिर उसको नीचे इंसिट्यू किया, मतलब उसको कंबस्ट किया. अब उसको सस्टेन करवाने के लिए कंटिन्यूसली हम गैस एज इन फॉर्म ऑफ एयर या स्टीम हम उसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, ताकि वो कंबशन फ्रंट वहां पे बना रहे, और वो उसके हीट या जो भी पैरामीटर्स हैं वो ट्रांसफर करता रहे उसी रिजर्वायर में ना. आई होप यू गॉट योर आंसर. इसके अलावा सो आई थिंक फॉर टुडेज लेक्चर इट्स ऑल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम EOR प्रोसेसेस को पढ़ेंगे कि EOR प्रोसेसेस कौन से होते हैं और उनका क्या मकसद होता है. And your attendance will be the same attendance which you are present here. I have already downloaded that. तो हमेशा मैं बीच क्लास में अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया करूँगा या कभी लास्ट में, so it depends, but you should be available in your class from whatever time is allocated there. तो उसी टाइम में आपने क्लास में होना है, and inshallah after Eid we will be conducting physical classes. So I hope that these lectures, which are around 18 lectures, अब प्रॉब्लम ये कि इसमें भी हम बहुत अच्छा सारा कोर्स कवर कर लेंगे. अब इन 18 लेक्चर्स को भी आपने गौर से कैप्चर करना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आई थिंक दैट फिजिकल क्लासेस का एक हफ्ता होगा, देन अगेन आपके मिड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, दिस इज जस्ट माय अजम्पशन ना. तो हो सकता है कि आपकी जो मेजर पोर्शन है, मेजर चंक है आपकी कोर्स डिलीवरी का, वो इन ऑनलाइन क्लासेस में से ही हो, क्योंकि 3 के बजाय 6 क्लासेस रखी हुई हैं हर सब्जेक्ट की. सो यू विल बी burdened with a lot of course content, you know, so be prepared for that, and best of luck. इंशाल्लाह फिर कल आई थिंक सुबह को मेरी क्लास है 8:30 बजे, so please be available at the time, and we will continue where we left today's lecture.
थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सर कॾहिं कॾहिं नेट जो मसइलो थींदो आहे असांजे